Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis, and today is Wednesday, 5th July, and we are here with the Hindu analysis of Wednesday. अच्छा, एक क्वेश्चन है. आज 5th जुलाई है. Yesterday was 4th July. Okay, 4th July is Independence Day of which country? कोई बता सकता है? Independence Day of which country? It's a very famous country actually. That is why you should be knowing. If you know it, please write it in the live chat. Okay. Now, अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दो yes sir you are audible, so that we can start our session. So the first article talks about SEO Shanghai Corporation Organization calls for multipolar world as Iran joins grouping. I have discussed it yesterday also that there will be SEO meeting, online VC video conferencing meeting. Okay, yesterday it happened and this article is all about that. Yes, many people are writing 4th July is the Independence Day of USA. कब हुआ था? In which year? Yes, Gupta, everything will be covered in batch 5, of course. Huh? So, Independence Day, 4th July, which year? So, it was actually 4th July 1776. USA was declared as independent. So, US Declaration of Independence was done on this date. That is why 4th July is celebrated as the Independence Day of USA. Okay, very good. Now, we are talking about this SEO, Shanghai Corporation Organization. So, India was actually the host country. Originally it was supposed to happen in-person meeting, but later on it was changed to VC, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. So शुरू में ये डिसाइड किया गया था कि फिजिकल मीटिंग होगी, लेकिन बाद में डिजिटल मीटिंग पर चेंज कर दिया गया, यानी ऑनलाइन मीटिंग हुई. ओके, यस. So that is what is being talked about, and Iran joins as grouping. So SEO का the newest member would be, याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, the newest member of Shanghai Corporation Organization is Iran. Okay, it was decided, 1 or 2 years back that Iran would be joining SEO, and officially now Iran has become the member of SEO. ठीक है, तो ईरान जो है वो ऑफिशियल मेंबर बन गया है SEO का. Okay, indicating a lack of consensus. Consensus मतलब not all the countries are not coming on same page, है ना, इसको कहते हैं consensus. India stayed out of sentence on economic cooperation on China's Belt and Road Initiative, etc. So I hope you are aware, India has not approved China's Belt and Road Initiative. मैंने कई बार पढ़ाया है. If you are not aware of that, please go and read it. Belt and Road Initiative of China. It is very, very important. Or what we call it as One Belt, One Road Initiative of China. Go and read it. This is very, very important. Owing to the project in POK and all. So I hope you are aware, because CPEC, China Pakistan Economic Corridor, the wing of Belt and Road Initiative passes from POK. That is why India has not become the part of Belt and Road Initiative. India has not approved Belt and Road Initiative. I hope you are aware of these things. We have discussed so many times. So SEO calls for cooperation on digital payment and countering radicalization. So that was the things being talked about here. So yes, now there's a question for you. Yes, देखो, some people are writing, yes, Belt and Road Initiative जो है ना, मॉडर्न टाइम का जो सिल्क रूट है उसी को कहते हैं, मॉडर्न डे सिल्क रूट जो है. ओके, यस. एक वाटर वाला भी, उसको मैरी टाइम सिल्क रूट कहते हैं. दैट इज ऑल्सो देयर. यस. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज एक्चुअली वन ऑफ द एस्पेक्ट. तो बेल्ट एंड रोड का एक पार्ट जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी है. ठीक है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. Then CPEC, China Pakistan Economic Corridor, which passes from POK, and because of which India has not joined the Belt and Road Initiative. So CPEC also is a part of Belt and Road Initiative. Yes. So now the question is, after Iran joins SEO Shanghai Corporation Organization, SEO will be having how many members now? Your options are 7, 9, 12, 10. आपको ये बताना है कि जब ईरान SEO का मेंबर बन गया तो अब टोटल कितने मुल्क हैं SEO में. यस, yes, almost all the people are right. Very good. Gauri, Namra, Aftab, Iram, Param, Shivam, Priya, Arva, Iram, Nitika. Yes, Rashmikant.
I cannot take everyone's name. So B is the right answer. 9 is the right answer to this question. Now we'll be having 9 members. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ अभी, if you read it, है ना? The formation of more representative and multipolar world order is in the global interest. The leaders of SEO said at a virtual summit, virtual मतलब वही online meeting, है ना? Chaired by PM because PM Modi, because India is actually the host this year, right? India is the host of actually SEO as well as G20 भी होने जा रहा है ना? So that is what you should be knowing it. The grouping's decision to induct Iran as the 9th member, है ना? Iran as the 9th member, तो यहाँ लिखा हुआ अभी. And latest was one of the number of agreements signed at summit this year. So Iran has been inducted as the 9th member of SEO. And India hosted the summit for the first time. पहली बार India host है. So for the first time India is the host, who refused to join other members on paragraphs related with China's Belt and Road Initiative. तो ये वालों को इंडिया ने अप्रूव नहीं किया. So we did not agree to China's Belt and Road Initiative statement and stayed out मतलब did not sign, है ना, या उसको agree नहीं किया of the joint statement on SEO Economic Development Strategy 2030. So this SEO Shanghai Corporation Organization Economic Development Strategy 2030 was not signed by India, or what was not approved by India because it has link with Belt and Road Initiative and all. PM Modi took a sharp aim at Pakistan for cross-border terrorism and China for connectivity project and all that do not respect sovereign boundaries. So these are the things also being talked about here. ठीक है? Yes. Digital payment नहीं समझते हो? देखो, डिजिटल पेमेंट मतलब पेमेंट जैसे पेटीएम है ना, यूपीआई से भीम से जितना पेमेंट करते हो ये तो डिजिटल पेमेंट है ना. सो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस मतलब जिसके माध्यम से आप डिजिटल पेमेंट करोगे, लाइक यूपीआई है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल पेमेंट इंटरफेस. ओके, यस, हाँ. Okay, the agreement signed include New Delhi Declaration. Yes, because New Delhi was the host. So New Delhi Declaration was signed and this was related with cooperation between SEO countries on counter radicalization, digital transformation, etc. and all, है ना, and share expertise on digital payment interface, है ना. मतलब कि जैसे for example जैसे UPI जो है ना वो other countries में ही work करना शुरू कर दे, so we can have collaboration with other countries. So that that UPI can work in other countries as well. So that if an Indian is going to that country, ठीक है, so वहां भी जैसे मान लो for example India और जैसे ईरान में भी शुरू हो जाए, they share digital payment UPI, है ना. Now if an Indian can go to Iran, then he or she can use UPI there also. इस तरह का कोई concept हो या Paytm या कोई भी इस तरह का. Okay, so that is what the idea of digital payment is. ठीक है. Okay, now Russia and Iran, yes, SEO remember criticized non-UN sanction on incompatible with the principle of international law. देखो अब sanction समझते हो? Sanction मतलब होता है it is also called as embargo in international relation term, which means a sort of an economic boycott. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? SEO members jointly criticize the embargo or economic boycott, which are done by non-UN countries. देखो होता क्या है, देखो non-UN, देखो if the world has to boycott any country, it should be from a United Nation. ठीक है, so कोई और country XYZ country, जैसे मान लो US ने कई बार किया, US has boycotted Iran and Russia, है ना, through CAT. तो कोई एक कंट्री नहीं करे बल्कि इंटायर यूनाइटेड नेशन शुड बी एक्चुअली डूइंग इट, नॉट वन कंट्री. तो वही वो बता रहे हैं कि दे हैव क्रिटिसाइज्ड नॉन यूएन सैंक्शन. ओके, सो द सैंक्शन व्हिच इज पुश्ड बाय व्हिच इज नॉट पुट बाय यूनाइटेड नेशन रादर बाय अ सिंगल कंट्री. सो परहैप्स दे आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू यूएस काटसा, हालांकि नाम नहीं लिया, बट आई थिंक दे आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू दिस दैट यूएस हैज इम्पोज्ड a lot of sanction on Russia and Iran. So they were indirectly talking about that. Okay, incompatible with the principle of international law. They say कि UN should put sanction, not any other country, because that is not correct according to the international law. ठीक है, समझ गए? Okay. However, the declaration noted that only interested member states signed the economic strategy, है ना, while leaving out India out of that. So we did not sign the economic strategy document. अभी हम लोगों ने बताया भी, है ना, यहाँ भी देखो, यहाँ लिखा है ना, Economic Development Strategy 2030, India did not sign it because it disapproves of Belt and Road Initiative.
as one of its part, that is CPEC, China-Pakistan Economic Corridor passes from POK. We have discussed this so many times in our classes. So go and read about CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, and why India has reservation with CPEC. Isko padhiyega jaake. This is very, very important. You should be knowing it. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold basic principle of SEO charter and all. Okay. Now, where is the headquarter of SEO Shanghai Corporation organization? Your options are Shanghai, Beijing, Moscow, New Delhi. What is the right answer? सबको like button press करते जाओ guys. At least 20-30 plus likes ले जाओ. Everyone please press the like button. Yes, and subscribe to our channel as well. Okay, yes, Gauri, Param Khoj, Priya Chavan. The right answer is option B. Beijing is the right answer to this question. So Beijing is China's capital, and this is the headquarter of SEO. Now, some people would be thinking, sir, यहाँ Shanghai लिखा है, यहाँ Shanghai लिखा है. So they will, but यहाँ पर ये वाला logic fail कर रहा है. ठीक है? So the right answer is B. Beijing is the right answer to this question. Actually, Shanghai Corporation Organization का पुराना नाम था Shanghai 5. And first meeting had happened in Shanghai. ठीक है? First meeting यहाँ हुआ था, इसी से नाम पड़ गया. Okay? Since the Shanghai 5 first meeting happened in Shanghai, the city in China, the name comes from here. But the headquarter of Shanghai Corporation Organization is not in Shanghai, rather in Beijing. Okay? So B is the right answer to this question. Let's move on to the next one. Which of the following is not a member of Shanghai Corporation Organization? Your options are Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Russia. इसमें से कौन सा SCO का member नहीं है? Yes, Param Khoj, we are coming to the year and all. I'll be explaining. Just wait. Which of the following is not a member of SCO, that is Shanghai Corporation Organization? I know it's a slightly tough question, but I have explained many times. अगर आप बहुत दिन से हमको follow कर रहे होगे तो आप आंसर कर दोगे. Actually, I have got only one correct answer, and the right answer is Turkmenistan. मैंने कई बार बताया है, तुर्कमेनिस्तान is a very neutral country. तुर्कमेनिस्तान और स्विट्जरलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है. It has never took part in any war and all. These two are generally considered as very neutral country. ठीक है? So here the right answer is Turkmenistan. So one option one, Namra Aftab, Param Khoj, Gargi, you all right? A is the right answer to this question. ठीक है? ये सब है. किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. देखो, इंडिया है, चाइना है, यहाँ पे रशिया है. ठीक है? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है. 1 2 3 4 5 6 7 है ना, एंड 8 ईरान है, एंड 1 इज लेफ्ट. 1 2 एंड पाकिस्तान. हाँ, यस. So these are the 9 nations. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 nations are there, the part of SEO. अब आप गौर से देखोगे, this one I'm making it with red pen. This is not a part of SEO. I mean, it is considered as very neutral country. बहुत neutral माना जाता है, बहुत rarely international politics में participate करता है. So just have an idea about it. There can be questions from SEO like this, because of course it is in the news. So they can ask questions from here. Be careful. ठीक है? 9th member अभी ईरान बना है, ये वाला जो है, this has become the 9th member. I have just discussed, है ना? Okay, so let's move on further. About SEO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल. यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की कंट्रीज में. ठीक है ना? जैसे यूरोप, रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप पे आता है ना, इसीलिए. ओके, देन इट इज द सक्सेसर ऑफ शंघाई 5 फॉर्म्ड इन 1996, है ना? सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ शंघाई 5 हैपेंड इन शंघाई, इसीलिए उसका नाम भी वहीं से पड़ा है ना? सो ओरिजिनली जो 5 लोग थे वो ये थे: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान. Then later on Uzbekistan added, then India and Pakistan got added in 2017 9th June. ठीक है? अब ईरान को अभी recently 2023 में it has been added. So these are the basic facts about SEO Shanghai Corporation Organization that you must be knowing, because SEO is very, very important now. Okay, yes. Before moving on, guys, this is a paid course. We are running a crash course also. 4-5-6 months is left. You should go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are being provided. If you have any question, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. और this is our free 3-day trial. You can go for this 3-day trial on our paid classes. So the link is given in the description. Let's move on further.
अ मैक्रो व्यू ऑफ फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट, है ना. ये वाला फिस्कल मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद फिस्कल वर्ड कम्स विद इकोनॉमी, है ना. कि फिस्कल हेल्थ यानी it is related with expenditure and revenue. So that is what fiscal is all about. So fiscal health of states के बारे में बता रहे हैं कि how are states performing as far as fiscal deficit, revenue deficit, etc. are concerned. So he is giving some percentage. तो सिर्फ याद नहीं रखना है, अभी जो चेंज होता रहता है ना. In the state mobilizes altogether more than third of total revenue, spent 60% of combined government expenditure. Government and have a share government borrowing that is 40%. 40% गवर्नमेंट बोरिंग का शेयर होता है. अभी सब इतना याद नहीं रखना है, ठीक है. गिवन द साइज ऑफ फिस्कल ऑपरेशन ऑफ स्टेट एंड अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फाइनेंसेस इज क्रिटिकल इन ऑर्डर टू ड्रॉ एविडेंस बेस्ड इंटरफेरेंस. देखो ही इज गॉन वेरी मच इन डिटेल. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन डिटेल. बस बेसिक आइडिया होना चाहिए. इट इज बिकम एविडेंट टू इंक्रीज इन जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट दैट अकॉर्ड ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक. यस, देखो जब कोविड पैंडेमिक हुआ तो गवर्नमेंट वाज सपोज्ड टू स्पेंड मोर, है ना. और टैक्स बहुत ज्यादा, कलेक्शन रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था. ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेर लॉक्ड, सो लॉकडाउन हैपेंड, सो बिजनेसेस वेर नॉट हैपनिंग मच, तो टैक्सेस उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ एंड ऑल. सो उस वक्त अपने आप डेफिसिट तो बढ़ेगा ना. डेफिसिट मतलब क्या है? द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. ओके, नाउ दिस डेफिसिट इज रिसीडिंग, मतलब कम हो रहा है. व्हाई? बिकॉज नाउ कोविड इज गॉन, है ना, एंड नाउ वी आर एक्चुअली रिकवरिंग बैक. तो जो वो डेफिसिट था वो कम हो रहा है ना. So the deficit and debt जो कर्ज लिया हुआ था, that occurred during COVID-19 has begun to recede. Recede मतलब होता है decrease करना, keep on decreasing. There have been significant post-pandemic fiscal correction at UN and state level. हाँ, post-pandemic मतलब after the pandemic, a lot of corrections are happening. अभी सब percentage नहीं याद रखना है because it will keep on changing. This sharp reduction in fiscal deficit suggests that we cannot have an impressionic view about fiscal situation and all. देखो fiscal deficit, I hope you are aware, है ना. इसको इस तरह डिफाइन करते हैं. फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. इसको आप इसे समझ लेना. इट इज इक्वल टू द बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट. कितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है. सो द मोर द फिस्कल डेफिसिट इज, वी आर रेफरिंग दैट वी आर डूइंग मोर बोरोइंग्स. तो बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होना खराब समझा जाता है. ओके, आइडियली अकॉर्डिंग टू द FRBM एक्ट 2003 या 2000 चेक कर लेना एक बार. FRBM एक्ट 2003, इट शुड बी 3% होना चाहिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट, है ना. ओके, बिकॉज थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट ठीक ठाक माना जाता है, बिकॉज यस इट मींस दैट वी आर बोरोइंग टू डू सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल. बट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इफ इट क्रॉसेस 3%, 4, 5, 6% हो जाए, सो ग्रेटर देन 3% इज जनरली कंसिडर्ड एज बैड. ओके, for the economy. Due to absence of aggregate of individual state budget, a consolidated view of general government is not readily available. अब इस पे इतना नहीं जाना है डिटेल में. RBI की एनुअल स्टडी ऑन फाइनेंसेस आता है. The author is talking about that. The analysis show that these state budgets have managed to contain their fiscal deficit. तो अब ये बता रहे हैं कि स्टेट जो होता है बहुत हद तक अपना फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में इफेक्टिव रहा है. So that is what they are saying. They are able to manage to contain. Contain मतलब होता है नॉट क्रॉस द लिमिट, मतलब कंटेन करना नहीं, रेगुलेट करना एक तरह से, बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं, है ना. सो द स्टेट्स वेर एबल टू कंट्रोल के सेंस में आप कह सकते हो देयर फिस्कल डेफिसिट. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सेकंड, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग एंड लाइवलीहुड ड्यूरिंग कोविड-19 वाज नॉट इजी एंड ऑल. अब जाहिर सी बात है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ गया था. हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग इंक्रीज्ड when there was COVID-19 and all. जाहिर सी बात है, कोविड हो गया जब पूरे वर्ल्ड में था, पूरे इंडिया में था, तो yes of course we were spending more on medicines, vaccine and all, of course. So third, states were able to reprioritize expenditure and quickly contain fiscal deficit and all. ठीक है. तो उसके बाद भाई कंटेन, फिर बाद में स्टेट्स ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया, हैंडल कर लिया. फोर्थ, द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर साइड एडजस्टमेंट, इंप्रूव्ड GST कलेक्शन एंड ऑल. तो इस थिंक वन ऑफ द गुड एस्पेक्ट इज एक्सपेंडिचर साइड को अच्छे से हम लोगों ने कंट्रोल किया, मतलब खर्चा को. देन GST कलेक्शन की वजह से भी गुड अमाउंट ऑफ GST कलेक्शन हैपेंड, है ना. GST which is an indirect tax collection happened good amount. However, there are significant fiscal challenges that need correction in the short to medium time frame and all. फिर और बहुत सारी चीज बता रही कि ये चीज और भी बहुत सारी चीज we have to correct it and all. ठीक है. That is what is being talked about. फिर बता रहे हैं कि according to 12th Finance Commission, Kerala, Punjab and West Bengal were fiscally stressed. Fiscally stressed means they were borrowing a lot. मतलब expenditure was more than the revenue and all.
बट अब जो है रिसेंट में अब बता रहे हैं कि नाउ दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस हैज इंक्रीज फॉर 7 स्टेट्स। पहले 3 स्टेट्स में स्ट्रेस था, अब 7 स्टेट्स में कुछ हद तक स्ट्रेस है एंड ऑल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। देखो होता क्या है, दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट में अगर एक्सपेंडिचर और रिसीट में जो पैसा आ रहा है उसके बीच अगर गैप बढ़ जाएगा, सो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट, देन इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट इज जनरली कंसिडर्ड एज वेरी बैड बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ रेवेन्यू अकाउंट इज रिलेटेड विथ डे टू डे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट कहीं हो रहा है इसका मतलब है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। सो डे टू डे एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, सो जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है ना, हर दिन होता है, रोड मेंटेनेंस, गिविंग सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, सो दीज कम अंडर रेवेन्यू अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है। रिसीट मतलब जो पैसा आया, ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में। ठीक है, सो इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, that will be called as, if the expenditure is more than receipt in revenue section, that will be called as revenue deficit. ठीक है, that is what here been talked about. ठीक है, on the question of revenue deficit, a long term view is also necessary. If we examine data from last 20 years, revenue deficit has almost disappeared from state budgets and all. तो वही बता रहे हैं कि revenue deficit की बात करनी चाहिए etc and all. ठीक है, going forward, interest free loans to the states by the union if continued may be linked to reduction in revenue deficit. ओके, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मतलब 0% इंटरेस्ट पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को लोन दे, है ना, दैट्स कॉल्ड एज रेवेन्यू इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो उससे हो सकता है स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल हो जाए, मे बी, है ना, दैट्स बीइंग डिस्कस्ड नाउ। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया, उसमें इतना डिटेल नहीं जाना है। नाउ एक जीएसटी की बात हो रही है ना। अच्छा, जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स रिजीम और इनडायरेक्ट टैक्स, बताइए तो। और एक और आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डे सेलिब्रेटेड एज जीएसटी डे? Your options are 3rd July, 5th July, 1st July, 9th July. 9th July. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाओ। Everyone please press the like button and subscribe to our channel. बताइए, जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? Yes, GST is an indirect tax. Very good. Rashmikant is right. Sanya Ansari, Pranjali, you all are right. जीएसटी डे जो होता है ना 1 जुलाई को मनाया जाता है, सो सी इज द राइट आंसर। यस, गौरी इज राइट, गार्गी, सानिया अंसारी, प्रिया चवन। हाँ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वाज पास्ड है ना। सो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, देखो यहाँ लिखा हुआ अभी इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम लिखा है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद जीएसटी? योर ऑप्शंस आर 99th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट, 107th अमेंडमेंट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी को डील करता है? सो इट वाज पास्ड ऑन 1st July 2017. दैट इज व्हाई 1st July सेलिब्रेटेड एज जीएसटी डे। बताइए, (103rd is EWS, Pranjali. 101st is the right answer. Yes, C is the right answer. देखो, ठीक है, तो ये 99th अमेंडमेंट क्या चीज से रिलेटेड? एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये वाला है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश से रिलेटेड है ना। ये 101st अमेंडमेंट। 103rd इज रिलेटेड विद ईडब्ल्यूएस एज फार एज आई रिमेंबर, है ना। सो हियर द बी इज द राइट आंसर, है ना। 1st July 2017 इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी एंड ऑल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड 101st अमेंडमेंट एक्ट, है ना। बिल था 122nd बिल, बट एक्ट जो था 103rd अमेंडमेंट एक्ट था, तो जो फाइनल एक्ट था 103rd। ओके ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी की बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस सून आफ्टर डेमोनेटाइजेशन शॉक एंड ऑल। तो देखो डेमोनेटाइजेशन कब आया था? 8 November 2016 पीएम मोदी अनाउंस्ड इट, एंड नेक्स्ट ईयर 1st July 2017 जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ओके, सो इसी की बात कर रहे हैं, दिस ऑल बिजनेस विल टर्नओवर एंड ऑल। तो इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। कुछ चीजें पता होना चाहिए। गो एंड फाइंड आउट जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड। ओके, द नेक्स्ट कैन बी आस्क्ड इज अबाउट दिस, कौन कौन सा जीएसटी से एक्सक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, these are actually still yet to be included, है ना। There is no roadmap on site the rate rationalization exercise or inclusion of these items. Electricity, petroleum, real estate, abhi bhi these are actually excluded from the GST.
ये काफी बड़ा रोल अदा करता है इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट. यस, आर्टिकल 279 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट जीएसटी काउंसिल. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ ठीक है. ओके. यस यस प्रांजलि, वेरी गुड. हाँ ओके. यस. फिर एंटीबायोटिक विद प्रॉमिस अ लाइफलाइन इंडिया वेट्स. अच्छा, एंटीबायोटिक अगर समझते हो मेडिसिन है ना. अब देखो इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, पूरा उसी पे उनका डिस्कशन है. एएमआर देखो होता क्या है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एएमआर मतलब क्या होता है. एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज अ सिनेरियो इन व्हिच द मेडिसिन व्हिच वाज सपोज्ड टू वर्क ऑन माइक्रोब्स आर नाउ नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा वो दवा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेडिसिन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. दिस मेडिसिन इज, आई मीन दिस गाय इज हैविंग टीबी, गॉड फॉरबिड, जस्ट गिविंग एग्जांपल, ट्यूबरकुलोसिस है इस बंदे को. तो ये मेडिसिन काम करनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग ऑन द पर्सन. उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी इसकी बॉडी के अंदर एएमआर डेवलप हो गया है, वो ड्रग्स रेसिस्टेंस हो गया. ड्रग्स मतलब यहाँ पे मेडिसिन के सेंस में होता है. ड्रग्स रेसिस्टेंस मतलब his body is immune, I mean his body has become in such a way that it is not responding to these medicines. Okay, दवा इस पर काम नहीं करी, उसको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं. Okay, so that is what is being, so the author is talking about an 18-year-old patient, ल्यूकेमिया जो था ब्लड कैंसर कहते हैं, तो उसी का एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि एक पेशेंट है उसके बारे में एंड ऑल. ठीक है. सो देन ही इज टॉकिंग अबाउट दीस मेडिसिन एंड ऑल. तो मेन जो उनका टॉपिक है वो ये इसी पर है. एएमआर जो डेवलप हो जाता है कि कॉम्बैट, हाउ टू कॉम्बैट ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन. अगर ड्रग इन्फेक्शन ऐसा हुआ है कि दवाई इस पे काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए फिर ड्रग्स और दूसरी मेडिसिन आती है ना. सो देयर डिफरेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स कहते हैं. अगर वो नहीं काम करी फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स होता है, फिर थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स होता है. यानी पहला वाला फेल करिए फिर दूसरा यूज किया जाएगा, नहीं तो तीसरा. ओके, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड. एएमआर बहुत डेंजरस चीज है कि दवा ही नहीं काम कर रही है. ओके, सो that is the challenges faced by doctor in combating drug resistant infection are multifaceted. बहुत सारे challenges हैं. They must navigate through shrinking arsenal of effective antibiotics and all. Okay. Then जैसे वो बात कर रहे हैं, he's talking about EUA, emergency use application has been given for COVID-19 vaccine. Similarly, we have to work on actually the AMR also, antimicrobial resistance पर और work करना पड़ेगा, है ना. That is what is being talked about here, है ना. We need to develop a powerful weapon to fight drug resistance and all. ठीक है, that is what is being talked. तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे ये है फर्स्ट लाइन ऑफ एमडीआर. एमडीआर टीबी होता है, जैसे यहाँ लिखा होगा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी. सो टीबी के लिए जो दवा आती है वो नहीं काम कर रही हो, तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग, यानी बहुत सारी दवा उस पर काम ही नहीं कर रही हो. आई मीन डिफरेंट मेडिसिन विच इज सपोज टू फाइट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस नॉट वर्किंग, then that is scenarios called as MDR TB, multi drug resistance tuberculosis. तो उसके लिए फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यूज की आती है राइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन. ओके, ये दोनों अगर नहीं काम करी फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग यूज किया जाता है. मतलब दीज आर, आई मीन उसको कहते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, मतलब बहुत सारी और ही बहुत सारी दवा काम नहीं कर रही है. सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड. इट्स वेरी बैड अगर दवा नहीं काम करती है. ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज अ वेरी सीरियस थिंग. फिर ये वाला देखो, मैंने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द पास्ट आल्सो. दिस जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट डिसमिसेस ट्विटर्स प्ली, इंपोजेस 50 लाख कॉस्ट. तो इसी पे है. आई थिंक 1 or 2 days बैक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात की थी. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच. वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, है ना. ओके, that is what is being talked about. तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है. अगेन the author is slightly critical of the judgment and all. Okay, so they have fined 50 lakh rupees the high court and all. इसी की वो बात कर रहे हैं. Then they are talking about section 69A of IT Act. ये सब मैंने पढ़ाया है लास्ट टू लास्ट क्लास में, है ना. मेन एडिटोरियल में we had discussed it. So power to issue blocking orders, है ना. section 69 के A के अंदर blocking orders है. If the government believes that something goes against the security of state sovereignty, integrity of India, public order, etc., then it can issue blocking orders, है ना. So that is why you should be knowing about this. Okay, yes. And this was challenged in Shreya Singhal case and it was upheld by Supreme Court. ठीक है. Okay. Now एक और आर्टिकल, lessons from fracas over food grains. fracas मतलब होता है quarrel and all, इसी को fracas कहते हैं. This is talking about specifically about a Karnataka government's scheme of Anna Bhagya scheme, which is actually direct benefit transfer temporarily has brought into focus limit of state government's policy intervention.
देखो अन्ना भाग्य, देखो एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, सो आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल, बट इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपने सुना होगा गरीब कल्याण अन्न योजना, सिमिलर टू दैट, वेयर फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड, चीपर फूड ग्रेन्स है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये काम करता है, चीपर फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू पीपल फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड एंड ऑल, है ना, कुछ 1 रुपया 2 रुपये में व्हीट राइस पर केजी आर बीइंग गिवन। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना, आई गेस। तो इसी के बारे में अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है ना, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। फिर एक है स्टूडेंट डेट क्राइसिस इन यूएस, हाँ ये काफी आजकल न्यूज में आ रहा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, देखो क्या है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली स्ट्रक डाउन दिस, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन released a plan to cancel billions in student loan debt after Supreme Court in a decision blocked his ambitious plan to cancel it। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट का कुछ डिसीजन था कि स्टूडेंट लोन को वेव करने के लिए, माफ करने के लिए, ओके, उसको यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया, बट अगेन यूएस प्रेसिडेंट इज कमिंग अप विद सम न्यू प्लान। ओके, तो कुछ स्टूडेंट लोन डेप्ट के से रिलेटेड कुछ और नया प्लान लेने के लिए आ रहे हैं, और सो दैट इज व्हाट, देखो उसमें कुछ आर्टिकल्स थी कि एक्चुअली स्टूडेंट लोन इज राइजिंग वेरी फास्ट, अब देख रहे हो कितना ज्यादा तेज बढ़ रहा है in the recent years. Similarly, the cost of education in USA is also increasing. तो एक बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, इतना डिटेल नहीं जाना। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया। फिर सो यूएस, अच्छा एक चीज है, गो एंड रीड इट, यूएस सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन अफर्मेटिव एक्शन, इसको पढ़िएगा जाके। तो affirmative action means you can say sort of a reservation which is provided in India and in jobs and all। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आया था अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड, थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा, बहुत डिटेल नहीं चाहिए बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो गो एंड रीड अबाउट दैट। एनीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर पोटेशियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी। व्हाट इज द राइट आंसर बताइए। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ एवरीवन। यस गाइस, 20+ लाइक्स ले जाओ, वी आर सीइंग ओनली 6 लाइक्स। सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन। यस, anemia is caused by the deficiency of, yes Gauri, very good, Pranjali, Priya, Shweta, Rashmikant, Sali, Ansari, Alia, yes it is caused by iron। आयरन का सिंबल ऐसे होता है ना Fe, पोटेशियम का K होता है ना। सो आयरन की डेफिशिएंसी और विटामिन ए वगैरह भी थोड़ा सा उसकी कमी से होता है, तो मोस्टली आयरन की कमी से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनीमिया इज कॉज्ड बाय द आयरन डेफिशिएंसी, ऑल द डेफिशिएंसीज इन फोलेट, विटामिन B12 एंड ए आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। ठीक है, इसमें होता क्या है एक्चुअली इन विच आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है, या होमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑक्सीजन, है ना। देखो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड का ही पार्ट होता है ना, उसी में हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है ना, उसी से हेमोग्लोबिन बनता है वगैरह एंड ऑल। आई होप यू आर अवेयर। तो अगर आरबीसी कम हो जाएगा आयरन की कमी से, सो हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को आसानी से मूव कराता है ना, so that will be problem and all, so this will cause anemia and all। okay, तो इसमें पेज 11 में एक आर्टिकल था, irrevocable connection between anemia and maternal health। irrevocable मतलब which cannot be broken, which cannot be broken, जिसको तोड़ा नहीं जाए ना। okay, irrevocable connection। तो एनीमिया और मैटरनल हेल्थ का, मैटरनल हेल्थ मतलब मदर्स हेल्थ, मैटरनल हेल्थ मतलब प्रेग्नेंट मदर, एक्चुअली मैटर प्रेग्नेंट मदर्स हेल्थ, यानी पेट में बच्चा हो, सो प्रेग्नेंट मदर्स हेल्थ, इसका रिलेशन है। वाई? बिकॉज एनीमिया जो होता है ना, अगर आप देखोगे, इफ यू हैव सीन इट, वो प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न चाइल्ड को बहुत ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है, न्यू बॉर्न चाइल्ड। ओके, so actually the pregnant woman and the newborn child has more vulnerability or susceptibility to have anemia। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बट एक आइडिया होना चाहिए, आपने देखा हो खास विलेज एरियाज वगैरह में, है ना। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक पाया गया है एनीमिया और पोस्टपार्टम हैमरेज से रिलेटेड। पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ ही मदर को एनीमिया हो सकता है। ओके, सो दैट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दिस, है ना, विद द हाई रिस्क ऑफ डेथ नियर वेरी। तो ये भी बता रहे हैं कि डेथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है अगर बहुत वर्स्ट केस हो गया तो। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट। तो एनीमिया के लिए बहुत सारी दवा वगैरह आती है बच्चों के लिए एंड वुमेन के लिए एंड ऑल। ओके, यस,
yes Gauri, you're right. हाँ. Now अब UCC की बात हो रही है. Okay, can you please tell me which article of DPSP talks about UCC? बताइए. Now when UCC is being talked about, Uniform Civil Code, the most of the politicians are saying that tribals would be protected. मतलब tribals will not be covered. देखो यहाँ पे भी आर्टिकल है. Impractical to bring tribals under Uniform Civil Code. Customs of tribal populace will be respected, says Union Minister on Uniform Civil Code. तो अगर लाए भी जाएगा, so most likely tribals will not be included in that, because I hope you are aware, they have their own system of their own customs, laws, their own personal laws are there, है ना? So when that is what is being talked about here, है ना? Yes, very good. Yes, Article 44, very good, good. Article 44 talks about that, non-justiciable, good, very good. You all are performing very well. आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. Very happy. Now, which state in India has a uniform civil code? Your options are Manipur, Sikkim, Tamil Nadu, Goa. I have taught in my paid classes. DPSP के सेक्शन मैंने पढ़ाया भी है अभी recently. किस स्टेट के पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है? उत्तराखंड ने डिसाइड किया है, लेकिन अभी उत्तराखंड में आया नहीं है. पहले से कहाँ है? गोवा में, मोर और लेस. वो भी 100% नहीं है, बट हाँ, वेरी नियर टू, यू कैन से यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो डी इज द राइट आंसर. यस, ऑल आर परम, कोच, रश्मिकांत, प्रांजलि, गौरी, प्रिया. यस, यू ऑल आर राइट. The right answer is D, or option 4, Goa is the right answer to this question. Why? Because Goa was ruled by Dash till 1961. Your options are French, Portuguese, British, Dutch. 1961 तक गोवा को कौन से इन चारों में से कौन रूल कर रहे थे? Anyone? Yes, Parab coach, very good. The right answer is Portugal, Portuguese. अच्छा, अब ये बताओ पोर्चुगाल का कैपिटल क्या है? What is the capital of Portugal? And Dutch कौन लोगों को कहते हैं? Countries कौन से? There are people of which country? ये बताओ. Yes, Portuguese were ruling Goa. अगर if you get a chance to visit Goa, you will see a lot of Portuguese church there also. Portuguese were ruling Goa till 1961 और उसका कैपिटल, yes, very good रश्मिका, good. हाँ, परम खोज, गौरी. लिस्बन is the capital. डच जो है, डेनमार्क पीपल नहीं, डेनमार्क पीपल को डैनिश कहते हैं. ठीक है, अच्छा चलो मैंने क्लियर बता ही देता हूँ. ये नेदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं. ठीक है, डेनमार्क के लोगों को डैनिश कहते हैं. ठीक है, डैनिश. ठीक है, ओके, मैं दिखा देता हूँ. सो हियर इज इंडिया, आप देख रहे हो. दिस इज स्पेन, दिस इज पोर्चुगल. ये वाला पोर्चुगल है. ठीक है, इसकी कैपिटल है लिस्बन. पोर्चुगीज लोग कहते हैं ना, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं. पेरिस इज द कैपिटल. नेदरलैंड के लोगों को कहते हैं, नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडैम, एंड द पीपल देयर आर कॉल्ड एज डच. ठीक है, यहां पर डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, है ना, और यहाँ के पीपल ऑफ देम आर कॉल्ड एज डैनिश पीपल. ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डच और डैनिश में. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर हियर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep. Thank you everyone. Thanks for watching. सबको like button press कर दो guys. Everyone please press the like button. We are seeing only 10 likes. Thanks for watching. Have a nice day.